नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, आपने कई जगह इनका ज़िक्र सुना होगा, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे आम चर्चा, कई जगह इनके नाम, इनके बारे में सुनने को मिलता है। तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये NBFC है क्या। एक नॉर्मल बंदे को, एक नॉर्मल इंसान को बैंक्स के बारे में पता होता है कि बैंक नाम की एक चीज़ होती है। ये NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर financial institutions that provide various financial services similar to banks but do not hold a banking license. सर्विसेज तो बैंक जैसी प्रोवाइड कर देते हैं बट बैंकिंग लाइसेंस नहीं है. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम, particularly in providing credit to sectors that are often underserved by traditional banks. ट्रेडिशनल बैंक्स जिस सेक्टर को सर्व नहीं कर पाते, ये उस पे फोकस कर पाते हैं, उसको क्रेडिट दे पाते हैं. की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NBFCs क्या हैं? नंबर 1, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. NBFCs, non-banking financial companies, are regulated by specific laws and guidelines set by the Reserve Bank of India in India and similar regulatory bodies in other countries. भारत में तो RBI और दूसरे देशों में RBI जैसी ही कोई संस्था. They are governed by the Companies Act and must comply with the rules regarding registration and operation. कंपनीज एक्ट से ही गवर्न होते हैं और इनको कॉम्प्लाई मानना पड़ेगा इन रूल्स को. रजिस्ट्रेशन के लिए जो चाहिए, ऑपरेशन के लिए जो रूल्स फॉलो करने हैं वो फॉलो करने होंगे. टाइप्स ऑफ NBFCs. टाइप्स क्या हैं? कई प्रकार की हैं, जैसे कि असेट फाइनेंस कंपनी, स्पेशलाइज करती है फाइनेंसिंग इन फिजिकल असेट्स लाइक मशीनरी एंड व्हीकल्स. लोन कंपनी प्रोवाइड करती है लोन्स फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, मॉर्गेजेस. इन्वेस्टमेंट कंपनीज फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, small loans to low-income individuals or groups, especially in rural areas. Infrastructure finance companies specialize करती है in providing loans for infrastructure projects. Housing finance companies focus on providing housing loans to individuals and builders. Services offered. Number 1, loans and advances. NBFCs offer various types of loans including personal loan, vehicle loan, home loan, business loan. They assess the credit worthiness of borrowers and provide funds accordingly. Assess करते हैं credit worthiness of borrowers and provide funds accordingly. Thereafter, investment services facilitate investments in shares, bonds and mutual funds, helping customers grow their wealth. Thereafter, insurance services. Some NBFCs provide insurance products, partnering with licensed insurers to offer life, health, and general insurance. Wealth management. NBFCs may also offer advisory services for wealth management and financial planning to individuals and businesses. Funding के source क्या हैं? Public and private deposits. Accepting deposits from the public and private sector, which are typically fixed term deposits offering interest. Issuance of debentures, raising funds by issuing debentures which are long term securities that pay a fixed interest. डिबेंचर क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है जो फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है. इक्विटी फंडिंग, रेजिंग कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स. शेयर्स को इशू करके भी कैपिटल को रेज कर सकते हैं. बैंक लोन्स एंड लाइंस ऑफ क्रेडिट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मीट देयर फंडिंग नीड्स. बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं. डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, no demand deposits. Unlike banks, NBFCs cannot accept demand deposits, meaning they cannot offer checking accounts or savings accounts where funds can be withdrawn on demand. Checking account और saving account नहीं दे सकते हैं जहाँ पे funds can be withdrawn on demand.
Limited payment services. NBFCs do not participate in the payment and settlement system. Payment settlement system में participate नहीं करते, so they cannot issue checks or facilitate electronic fund transfers. Regulatory environment. The regulatory framework for NBFCs is different from that of banks, which may lead to varied operational practices. Role and importance of NBFC. Role क्या है? Financial inclusion. NBFCs play a critical role in promoting financial inclusion by providing credit to underserved populations, particularly in rural and semi-urban areas. They help bridge the gap between traditional banking services and those who lack access to them. उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ. बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज एंड इंडिविजुअल्स, NBFCs contribute to economic development and job creation. Their lending helps stimulate consumer spending and investment in various sectors. Flexibility. NBFCs often have more flexible lending norms compared to traditional banks, allowing them to cater to a wider range of customers. They can adapt their products and services to meet specific customer needs. Niche markets. NBFCs can specialize in niche markets that may be neglected by banks, such as microfinance and asset financing. This allows them to serve customers who may not qualify for traditional bank loans. Risk mitigation. By diversifying their portfolio and providing credit to various sectors, NBFCs can help mitigate risks associated with economic downturns. Their presence in multiple sectors enhances financial stability. Innovation. Many NBFCs leverage technology to offer innovative financial solutions, including digital lending and online investment platforms. This drives efficiency and customer satisfaction in the financial services sector. What is the conclusion? In summary, non-banking financial companies are essential components of the financial ecosystem. They not only provide critical financial services to underserved populations, but also contribute to economic growth and stability. Through their diverse offerings and flexible practices, NBFCs fill the gaps left by traditional banks and play a vital role in promoting financial inclusion. Happy learning. Thank you.